and it is something that we must all agree should never happen again in the course of our governments come and go, political parties change, but we should never compromise the fundamentals of our national economic policy. At this time, we've been focused on making service delivery efficient and people-centered, fixing Pakistan's energy woes, rebuilding Pakistan's foreign relations, and giving a sense of stability in our policy, if not political, environment. As far as foreign policy is concerned, I'm happy to report, as a result of our teamwork and extensive positive engagement across the board, Pakistan's diplomatic relations, diplomatic ties have gone from strength to strength. Over the past 6 months, we've witnessed a positive trajectory of our diplomatic relations, be it with the East, the Middle East, the West, or the rest of the world, culminating in our exit from the FATF grey list, the Financial Action Task Force, and on our way, hopefully, for the restoration of our GSP Plus status. Just when this looming economic crisis was averted and things started to move in a positive direction, we experienced the worst ever climate catastrophe that Pakistan has ever seen. The monster monsoon on steroids, as Secretary General Antonio Guterres put it, resulted in 1/3 of the landmass of our country being underwater. 1 in 7 people affected, that's 33 million people of Pakistan, 16 million of which are children, 600,000 women waiting to give birth. The impacts of this on the backbone of our economy, the agricultural sector, have been devastating. The total loss and damage is estimated at more than $32 billion, which is 10% of Pakistan's GDP. This climate event will directly correlate with a significant portion of our population being thrust below the poverty line. Given the massive scale of destruction, we have been pushed back for decades, but in every crisis, there is an opportunity. And we can convert this crisis into an opportunity if Pakistan commits to not only investing in these less developed areas, in these rural areas that have been devastated by the flooding, but also as we look towards reconstruction and rehabilitation. We hope to do so in a climate resilient manner. We too share the aspiration to not only build back, but build back better. In our interactions with world leaders, including the recently concluded COP27, we have underlined the need for concentrated global action to take climate change as a priority. As the chair of the G77 plus China, we have led the demands of the Global South for climate finance and climate justice to enable developing countries to cope with climate adaptation and mitigation challenges. But in addition to that, we have, alhamdulillah, been successful, and this is a success not only of the developing world that has long held this demand, but of Pakistan and the people of Pakistan, that following the devastation from this climate catastrophe, in our capacity as G77 chair, we have successfully negotiated to add on to the COP27 agenda, in addition to mitigation and adaptation, but the concept of loss and damage. Because it was only after
We in Pakistan experienced the devastation of these floods that have resulted in a 10% loss to our GDP, that it became evident to us that there was no international financing mechanism for devastation, for loss and damage of this scale. And it was after our own experience that we joined the many countries that have long been demanding that loss and damage be added to the COP and global agenda. And we hope, if it was too late for the people of Pakistan to benefit from the lack of such an institution, that the next country, the next developing country to be affected, will be able to benefit from an internationally agreed upon mechanism for financing loss and damage. There should be no doubt in anyone's mind about the potential of climate change to reverse all endeavors for sustainable development goals. Climate change is one of the most national security threats that can ignite and deepen conflicts. And as we have witnessed, Pakistan is now ground zero for climate-induced disasters and must prepare for the challenges associated. Ladies and gentlemen, today the increasingly complex security environment poses multifaceted threats to national security and stability of the countries. With rapid advancement in technologies and proliferation of related knowledge, we are experiencing a visible change in the established security paradigm. In today's globalized world, the national security has emerged as a dynamic concept that is as much economic, political, social, and institutional as it is military and strategic in nature. In an age of fake news and disinformation, the threats to national security have increased manyfold. The specter of rising global food and energy prices is putting immense strain on national cohesion and unity, thus deepening internal fault lines. It is our considered opinion that the best way to safeguard and strengthen national security is to achieve economic self-reliance, rebuild and strengthen political institutions, deliver the 21st century governance that is demanded and required, ensure rule of law, and put the people at the center of public policy. This requires a much needed reset in our thinking, as well as the way we conduct the business of the state. Internal consolidation can alone enable our nation to secure its core economic, foreign policy, and security interests. And in order to do so, each institution must function within not only their constitutional domain, but with a primary focus on their objective, on their national goal. For example, I am a politician, I am a parliamentarian, and I represent my constituency in Parliament. My job is to be answerable to Parliament, to be present in Parliament, and rather than lashing it out with my political opponents on the streets or in the public arena, we have created this forum where all people of Pakistan can be represented, where our exchange of ideas, our debate should lead to the addressing of issues of national importance through consensus, so we can move beyond our consistent state of flux and focus on the priorities of our nation. Distinguished audiences, the new technologies led by this revolution in the field of artificial intelligence are playing a vital role in confronting various security challenges. In my view, the responsible use of technology advancement can make the world a better and safer place. Pakistan, being a responsible state, is always committed to play its role for international peace, stability, and order. Reciprocity, mutual interests, and international norms are the guiding principles that govern Pakistan's relations and the bilateral and multilateral levels. In the regional context,
the transformation of South Asian geostrategic environment has further accentuated the importance of this region in world affairs. Resultantly, regional cooperation and active engagement of regional and global players has become imperative, particularly to achieve regional peace, security, and socio-economic development. On the other hand, instability and turmoil that has beset our region for many decades also needs a firm and coordinated response by all stakeholders. We believe in meaningful dialogue on the basis of equality, not only to resolve bilateral issues, but also to unpack the immense economic potential of our region. It is here that the peaceful resolution of the long-standing occupied Jammu and Kashmir issue is, in light of the UN resolutions and aspirations of the Kashmiris, is central to establishment of sustainable peace in South Asia. Distinguished guests, it is heartening to note that Pakistan's defense industry has now achieved a good level of quality and reliability, wherein its products are comfortably competing in the international defense market. Though Pakistan is now exporting some high-tech defense products to more than 60 countries, yet the volume of exports, in my opinion, is not commensurate to our actual and true potential. A crucial factor in this context has been the limited involvement of the private sector in defense production and export activities. In addition, relatively less attention has been paid to academia industry interface and in the involvement of R&D organizations, which has curtailed the competitiveness of certain sectors of this industry. In order to achieve this objective, I will stress upon the integration of public-private defense industry to achieve maximum results. New ideas and the entrepreneurial and management skills of the private sector need to be co-opted with public sector defense industry. The potential of academia and R&D organizations needs to be incorporated with the defense industry for more efficiency as well as volume to our defense production exports. Our government, ladies and gentlemen, will continue to promote a business-friendly environment for investments in human capital and professional development in the demand-driven industry. The unity government is also committed to deliver an industrial strategy that contributes to growth and employment and encourages small and medium enterprises to come forward and join hands for the development of our defense industry. In this regard, I look forward to the Ministry of Defense Production's formulation of a clear policy framework to integrate the whole potential of Pakistan's defense industry. Distinguished guests, when we talk about the defense industry, International Defense Exhibition and Seminar is an iconic platform for showcasing the latest defense technologies and innovations. In fact, Ideas is a regional gateway for international manufacturers and suppliers to explore new avenues of defense cooperation through joint ventures, outsourcing, and collaborations. On the other hand, the presence of a large number of foreign exhibitors and delegates reflects Pakistan's deeply embedded and mutually beneficial relations with the international fraternity. I would say that Ideas is a shared vision for global peace, stability, and harmony amongst the community of nations. And the Ideas slogan, Arms for Peace, truly reflects Pakistan's principled stance in this regard. Ladies and gentlemen, before I wind up, allow me to appreciate the efforts of the Ministry of Defense Production, Defense Export Promotion Organization for successfully holding a series of ideas to exhibit the best of Pakistan's defense sector and promoting international cooperation in the field of defense production. I applaud the continuous support of the federal and provincial ministers, the Pakistan Armed Forces, law enforcement agencies, and the government of Sindh for the successful conduct of this mega event. I am also very pleased to know that the Pakistan Postal Services has issued a commemorative postage stamp to complement the holding of this very special edition of Ideas 2022 in the 75th year of the independence of Pakistan, and I am positive that this landmark event will achieve more progress in the years
to come. I thank you all. Pakistan, Bindabad. बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश 2022 आइडियाज़ की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ख़िताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के अमन के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल ज़रूरी है। देखते ही देखते बच्चे बड़े हो जाते हैं और इनके साथ इनके चैलेंजेस भी। इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए क्या ये रेडी हैं? बिल्कुल रेडी हैं। नए नीडो के साथ जो है स्पेशली डिजाइन्ड स्कूल एज किड्स की ग्रोथ, लर्निंग और इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो भरपूर बढ़े। नीडो, न्यूट्रिशन टू ग्रो। तो आओ रिफ्रेश करें कोलगेट मैक्स फ्रेश। बहू का डॉक्टर रहना मुश्किल है अगर हम सब मिलके उसके काम आसान न करें। मजेदार कढ़ाई तो शान मसाले से आसानी से बन जाएगी। शान, खुशियां चख लो। स्कूल्स का वापस खुलना अपने साथ लाता है बीमारियों का खतरा। सिर्फ डेटॉल का जर्म डिफेंस प्रोटेक्ट करे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से और दे यकीनी हिफाजत। लिप्टन येलो लेबल का नया ब्लेंड, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा गाढ़ी और ज्यादा जायकेदार। न्यू लिप्टन, बेस्ट टेस्ट एवर। लिबर्टी लैंड्स पर जारी तरक्याती काम अब तेजी से तकमील की जानिब गामजन है। फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट के साथ पहली बैलेटिंग 30 नवंबर हलोकी इंटरचेंज पर। ये है लिबर्टी लैंड्स। कॉल 08000 9000। बस 3 मिनट, क्योंकि वीट से मुझे मिले पार्ले जैसी सिल्की स्मूथ के इस वेडिंग सीजन रहे हमेशा रेडी विद वीट। कोई भी वीट का पैक खरीदें और 0345 1111 080 पर मिस्ड कॉल देकर सना सफीनाथ के जोड़े जीतें। लिप्टन येलो लेबल का नया ब्लेंड, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा गाढ़ी और ज्यादा जायकेदार। न्यू लिप्टन, बेस्ट टेस्ट एवर। देखते ही देखते बच्चे बड़े हो जाते हैं और इनके साथ इनके चैलेंजेस भी। इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए क्या ये रेडी हैं? बिल्कुल रेडी हैं। नए नीडो के साथ जो है स्पेशली डिजाइन्ड स्कूल एज किड्स की ग्रोथ, लर्निंग और इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो भरपूर बढ़े। नीडो, न्यूट्रिशन टू ग्रो। लिप्टन येलो लेबल का नया ब्लेंड, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा गाढ़ी और ज्यादा जायकेदार। न्यू लिप्टन, बेस्ट टेस्ट एवर। दिल अजनबी मिले अभी, मैं हेल्प करूं? प्यारा ये पल छूले अब। विंटर में ड्राई स्किन, इसको छुपाओ मत, नरिश करो। पॉन्ड्स बॉडी लोशन, इसका विटामिन B3, C और E से भरपूर फॉर्मूला दे 10 लेयर डीप एक्शन जो गहराई में जाकर स्किन को मुलायम बनाए। पॉन्ड्स बॉडी लोशन, सॉफ्ट और स्मूथ स्किन रोजाना। आम खबर है, इस्लामाबाद इंतजामिया के जलसे की इजाजत देने में ताखीरी हरबे। PTI की इस्लामाबाद जलसे और धरने का NOC जारी करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की इस्तदा पर केस 18 नवंबर को मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ की नुमाइंदा नीलम असलम से। नीलम, समाअत के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि PTI की इस्लामाबाद में जलसे और धरने का NOC जारी करने की दरख्वास्त थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की इस्तदा पर केस को 18 नवंबर के लिए मुकर्रर कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नौमुंतखब चीफ जस्टिस जो है आमिर फारूक, उन्होंने इस केस की समाअत की है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से आज डॉक्टर बाबा रेवान एडवोकेट अदालत में पेश हुए हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मुनव्वर इकबाल दोंगल जो है वो भी अदालत में पेश हुए हैं। दरख्वास्त गुजार की इजाफी दस्तावेज़ात जमा कराने की जो मुतफर्रिक दरख्वास्त है वो मंजूर कर ली गई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए केस की समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी है, जो कि आइंदा जुम्मे को होगी। जी, केस की समाअत 18 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया नीलम अरशद इन तफसीलात के लिए।
आगे बढ़ेंगे। रमजान शुगर मिल को NOC जारी न करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर हुकूमत पंजाब को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी और जवाब तलब कर लिया गया है। आइंदा समाअत तक जवाब न आने पर अदालत हुक्म जारी करेगी। रमजान को NOC जारी न करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर हुकूमत पंजाब को नोटिस जारी कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और आपने देखा अभी ब्रेक से पहले कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी आइडियाज़ 2022 की इनॉग्रेशन की तकरीब से खिताब कर रहे थे और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी आर्म फोर्सेस की एग्जीबिशन होगी। तलहा डेफिनेटली आप ज़रूर जाना चाहेंगे। यकीनन मैं तो जाऊंगा, कल लाजमी जाऊंगा, हर हाल में जाऊंगा और यकीनन हर पाकिस्तानी का शौक होता है यहाँ पर जाना वर्दा। और यकीनन ये बहुत बड़ी एग्जीबिशन होती है जिस तरह की यहाँ पर वेपन्स, आर्म्स, एम्यूनिशन, टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है। मैं समझता हूँ कि हर शख्स के लिए काबिल इंटरेस्ट की होती है और वो कहता है कि मैं जाना चाहता हूँ। हर कोई जा नहीं पाता है, बहुत सारे लोग नहीं जा पाएंगे। मैं जाऊँगा इंशाल्लाह। आपको वहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं वहाँ क्या हो रहा है तो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जरूर फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़रूर आपको दिखाएंगे भी, अपडेट भी करेंगे कि अंदर क्या चल रहा है, कितनी आर्म फोर्सेस चीज़ें रखी गई हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या नई नई चीज़ें आई हैं। और इसी के साथ ही हमारे शो का वक्त होता है ख़त्म। फिर मुलाकात होगी आपसे सुबह 9 बजे। देखना मत भूलिएगा, तो ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं आपसे सुबह 9 बजे। देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। तो आओ रिफ्रेश करें कोलगेट मैक्स फ्रेश। बहू का डॉक्टर रहना मुश्किल है अगर हम सब मिलके उसके काम आसान न करें। मजेदार कढ़ाई तो शान मसाले से आसानी से बन जाएगी। शान, खुशियां चख लो। यार क्या मौसम है तो चाय पियोगे? ऐसे मौसम में नहीं कह सकता हूँ। हाँ पिक कर ले यार। अच्छा हाँ ठीक है। उठा लो। आपके हाथ की खास चाय कैसे छोड़ सकते? समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ एवरीडे। स्कूल्स का वापस खुलना अपने साथ लाता है बीमारियों का खतरा। सिर्फ डेटॉल का जर्म डिफेंस प्रोटेक्ट करे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से और दे यकीनी हिफाजत। Endure. Unlock fashion for every you. लिप्टन येलो लेबल का नया ब्लेंड, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा गाढ़ी और ज्यादा जायकेदार। न्यू लिप्टन, बेस्ट टेस्ट एवर। सोना और FFC DAP खाद, मजबूत बुनियाद, भरपूर पैदावार। सोना और FFC DAP से भरपूर झाड़ और बेहतर पैदावार से हो काश्तकार खुशहाल। सोना की बेहतरीन खादें। दिल अजनबी मिले अभी, मैं हेल्प करूं? प्यारा ये पल छूले अब। विंटर में ड्राई स्किन, इसको छुपाओ मत, नरिश करो। पॉन्ड्स बॉडी लोशन, इसका विटामिन B3, C और E से भरपूर फॉर्मूला दे 10 लेयर डीप एक्शन जो गहराई में जाकर स्किन को मुलायम बनाए। पॉन्ड्स बॉडी लोशन, सॉफ्ट और स्लो स्किन रोजाना। देखने हो पाकिस्तान के नंबर 1 प्रोग्राम्स या रहना हो दिन भर की खबरों से बाखबर, जानना हो सीनियर तज्जिया निगारों के बारे में या जुड़े रहना हो दुनिया भर की हर लाइव अपडेट से, तो सिर्फ bolnews.com पर जाके क्लिक करें बेल आइकन और जुड़े रहें हर खबर की लाइव सूरत हाल से। अब चाहे आप कहीं भी हो, हर खबर आसानी सबसे पहले आपकी पहुंच में, सिर्फ bolnews.com से। और साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी जुड़े रहें दिन भर की ताजा तरीन खबरों से।
वो भी सिर्फ एक क्लिक पर, क्योंकि ये है पाकिस्तान की नंबर 1 वेबसाइट bolnews.com। लिप्टन येलो लेबल का नया ब्लेंड, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा गाढ़ी और ज्यादा जायकेदार। न्यू लिप्टन, बेस्ट टेस्ट एवर। लिबर्टी लैंड्स पर जारी तरक्याती काम अब तेजी से तकमील की जानिब गामजन है। फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट के साथ पहली बैलेटिंग 30 नवंबर हलोकी इंटरचेंज पर। ये है लिबर्टी लैंड्स। कॉल 08000 9000। This hourly clock is brought to you by यूनियन डेवलपर्स, बुलंद मयार जिंदगी। and नए ब्राइटनेस सब राइट कर दिया, लेकिन आपकी डाइट ने सब टाइट कर दिया। and इसलिए देर पर आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। कराची एक्सपो सेंटर में बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज का आगाज। बैनुल-अक़वामी तिजारती और फौजी वफूद शरीक। बिलावल भुट्टो का खिताब, कहा मौसमियाती तब्दीली के असरात से पाकिस्तान काफी मुतासिर हुआ। सैलाब की वजह से लाखों अफराद मुतासिर हुए। मुल्क डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका है। मुआशी चैलेंज से निकालने के लिए काम कर रहे हैं। नुमाइश के बाइस एक्सपो सेंटर के अतराफ अहम शाहराहें बंद, मुतबादिल रास्तों का इंतजाम। हकीकी आज़ादी मार्च का 13वां दिन आज सराय आलमगीर से शुरू होगा। क़यादत शाह महमूद कुरैशी करेंगे। असद उमर जड़ावाला से चिन्योट पहुंचेंगे। जलसे से खिताब शेड्यूल। खैबर पख्तूनख्वा से काफिले रवां दवां। स्वाबी में जलसा 2:30 बजे होगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तकरीर